Good morning, students. We welcome you all. Today we start with our next topic, socialism in Europe and the Russian Revolution. फर्स्ट सब टॉपिक है आप लोगों का द एज ऑफ सोशल चेंज. बेसिकली रशिया जो था एट दैट टाइम 3 तरह के लोगों में डिवाइड था. एक थे लिबरल्स, दूसरे थे रेडिकल्स और तीसरे थे कंजर्वेटिव्स. इसमें जो दो ग्रुप थे हम लोगों के, दे वांट अ चेंज, दैट इज दे आर द लिबरल्स एंड द रेडिकल्स. जो लिबरल्स थे वो एक ऐसा नेशन चाह रहे थे जिसमें कि सभी रिलीजन को टॉलरेंस हो. एंड दैट सेकेंड, दे आर टोटली अगेंस्ट द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ द मोनार्क्स. And they wanted a representative elected parliament government must be there, and there must be a trained judiciary which can be questionized, और जिसके ऊपर किसी भी रूलर और अदर ऑफिशियल का कोई कंट्रोल जो वो ना हो. एंड दे आर आल्सो इन फेवर ऑफ granted a right to vote not to everyone. They think that right to vote must be given to the only men, those who have a property, and they are not in favor of right to vote for the women. The changes by the radicals, they form a nation where the government should be based on the majority rule, and they in favor of granted a right to vote for women, and they oppose the privileges. And third, the thoughts of the conservatives. Conservatives, they oppose both radicals and liberals, and they oppose the idea of change. But up to 19th century, they understand that there must be some changes, and believe that past should be respected and change should be made through a gradual changes. सेकंड था आप लोगों का इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज. द इंडस्ट्रियल एंड सोसाइटी चेंज एट दैट टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो था सभी लोग, मैन वोमेन चिल्ड्रन जो थे फैक्ट्री में काम करना पड़ रहा था, और उनके जो वर्किंग आवर थे वो काफ़ी ज़्यादा थे और वेजेस जो थी बहुत कम थे. अनएम्प्लॉयमेंट जो थे टाइम एक कॉमन हो गई थी, और इंडस्ट्रियल गुड्स की जो डिमांड थी वो कम हो गई थी. और उस एट दैट टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीरियड में हाउसिंग और सैनिटेशंस फैसिलिटी जो थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी. इसमें जो कुछ लोग थे जैसे नेशनलिस्ट हो गए, लिबरल्स हो गए, रेडिकल्स हो गए, इस इशू को लेकर उन्होंने बड़े सारे सजेशन जो थे गवर्नमेंट के सामने रखे. बट एट लास्ट they wanted a revolution so that they can remove this type of government. तो फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया में जो रेवोल्यूशनरी थे वहाँ के मोनार्क्स को हटाने के लिए काम किया, और 1815 में गुस्पी मेज़नी ने इस एम को पॉइंट में रख के एक इटालियन रेवोल्यूशनरी या रेवोल्यूशनरी पार्टी इटली में जो थी वो एस्टेब्लिश की थी. थर्ड हम लोगों का द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप. सोशलिस्ट जो थे वो अगेंस्ट थे प्राइवेट प्रॉपर्टी, और उसको सारी जो जितनी भी सोशल लेवल थी उसका वो उसको जड़ मानते थे उस टाइम पे. और सभी जो सोशलिस्ट थे
दे हैव देयर ओन सेपरेट विजन, जिसमें पहले हम लोगों का रॉबर्ट ओवेन हम लोगों का इंग्लिश मैन्युफैक्चरर था। वो चाहता था कि एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनी चाहिए जिसका नाम जो न्यू हार्मनी था इन इंडियाना यूएसए। पर कई अदर जो सोशलिस्ट थे वो मानते थे कि कोऑपरेटिव जो इतने बड़े स्केल पर जो नहीं होनी चाहिए। सेकंड हम लोगों का लुइस ब्लैंकन जो था फ्रांस का, वो चाहता कि गवर्नमेंट कोऑपरेटिव को इनक्रेज करे और उसको काम करने वाले लोग साथ में जो थे गुड्स प्रोड्यूस करे और प्रॉफिट को आपस में जो वो डिवाइड कर ले। थर्ड हम लोगों का कार्ल मार्क्स का जो मानते थे कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी वो एक कैपिटलिस्ट के पास थी, और जो कैपिटलिस्ट हैं वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते थे और फैक्ट्री जो थे उसका प्रॉफिट जो गेन करते थे, जो कि जो प्रॉफिट था वो वर्कर्स के बिहाफ के ऊपर था। पर जैसे जैसे टाइम पास ऑन होता गया, जो कैपिटलिस्ट था उसकी कंडीशन तो अच्छी होती गई, बट जो वर्कर था उसकी कंडीशन जैसी थी उससे नहीं बदली। मीन जैसा था वो वैसा के वैसा रहा, जबकि इंडस्ट्रियलिस्ट का प्रॉफिट जो था डे बाई डे जो था वो इंक्रीज होता रहा। इसलिए भी वर्कर जो थे वो कैपिटलिस्ट और रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो थे वो रिमूव करना चाहते थे। कार्ल मार्क्स का मानना था कि हम सब अपने आप को फ्री करने के लिए वर्कर्स को एक रेडिकल सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी होगी, जिसमें कि प्रॉपर्टी सोशली कंट्रोल्ड हो। फोर्थ हम लोगों का सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। In 1870, socialist ideas spread through the Europe. Coordinated efforts, socialists formed an international body, mainly the Second International. And worker in Germany association, they formed the association. They fight for better living and working conditions. They set up funds for help members in time of distress and demanded a reduction of working hours and also right to vote. In Germany, these associations worked closely with the Social Democratic Party (SPD) and helped it win parliamentary seats. In 1905, a trade unionist formed the Labour Party in Britain and Socialist Party in France. However, till 1914, socialists never succeeded in forming government in Europe. Represented by strong figures in parliamentary politics. Their ideas did shape legislation, but government continued to be run by conservative liberals and the radicals. Second हम लोगों को the Russian Revolution, the one of the least industrialized European states. The situation was reversed, and socialists took over the government in Russia through the October Revolution 1917. The Russian Empire in 1940, Tsar Nicholas II has ruled Russia and its empire. Beside the territory around Moscow, the Russian Empire included current-day Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, part of Poland, Ukraine, Belarus. It stretched to the Pacific and comprised today's Central Asian states. And रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी मेजॉरिटी रिलीजन जो था, और रशिया में बाकी रिलीजन जैसे कैथोलिक्स हो गया, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बुद्धिस्ट को भी जो था इंक्लूड जो था वो करता था। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, रशिया इन द बिगिनिंग, रशिया के लोगों में ज़्यादातर लोग जो थे दे आर द एग्रीकल्चरिस्ट, एंड 85% लोग जो थे अपनी लाइवलीहुड जो थे एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थे। और रशिया के जो लोग थे अपने लिए और मार्केट के लिए ग्रेन जो थे प्रोड्यूस करते थे, और रशिया इट बिकम अ मेजर एक्सपोर्ट ऑफ अ ग्रेन। वहाँ पर इंडस्ट्री जो थी ज़्यादा नहीं थी, फिर भी सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को जो थे वो एक
दो जो थे वो इंडस्ट्रियल एरिया थे, और ज़्यादा जो फैक्ट्री सेटअप हुई थी जब रशिया रेलवे नेटवर्क को एक्सटेंड किया गया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो थी इंडस्ट्री में इंक्रीज़ हुई। और ज़्यादातर जो इंडस्ट्री थी इंडस्ट्रियलिस्ट की अपनी प्रॉपर्टी थी, और गवर्नमेंट देखती थी कि वर्कर जो थे वो लिमिटेड वर्किंग आवर तक ही काम करे और दे आर गेटिंग ऑल्सो मिनिमम वेजेस। बट ये रूल जो था वो बार बार तोड़ा जाता था और कई वर्कर्स को 15 घंटे काम करना पड़ता था, और इंस्टेड ऑफ 10 to 12 आवर्स। वर्कर्स में भी बड़ी सारी इनइक्वालिटी जो थी वर्कर्स वर डिवाइडेड इनटू सोशल ग्रुप। Some had strong link with the village from which they came. Others have settled in cities permanently. Work were divided by their skill. Metal workers absent to work recalled metal workers consider themselves autocrats and among other workers. Their occupation demanded more training and skill. Women made up 31% of the factory labor force by the 1940, but they were paid less than men. The division among the workers showed themselves in dress and manners too. Some workers formed associations to help members in time of unemployment or financial hardship, but such associations were few. Despite division, workers did unite to strike work, stop work. They disagree with employees about dismissal or work condition. They strike took over the frequently in the textile industry during 1896-97 and in the metal industry in 1902. In the countryside, the peasants cultivated most of the land, but the nobility, the crown, and the Orthodox Church owned large property like workers. Peasants were divided. They were too